Am I audible, visible? Is everything fine at your end? All good? In case everything is fine, just give me thumbs up. Yeah, Ragni, good evening. Sai Dipya, good evening. Opera of Life, Hare Krishna, Ashu, Kritika, great. So, how was your first answer writing? I guess first, second, Lika answer. Few of you have submitted. Actually, I got late because of this technical error. Acha, technical error resolve hua? Now are you able to listen in both the earphones, right, left? कल right में नहीं आ रही थी ना voice. आज I have tried to rectify it with the help of the chat GPT. Good evening, Prashadhi Raj. Good evening, Ikra, Hare Krishna, Vaibhav. Voice is still low. I guess. Is it with everyone? It is low, you are saying. And how about the how about the yesterday's content is in the Telegram section. So what you need to do is I have to attach the Telegram over here. You can find it, the link of the Telegram channel from this Telegram channel. Okay. Fine. Now let us start today's session. Topic of the day is Aristotle. So we are starting Aristotle now. We are done with Plato yesterday. हमने कल Plato कर लिया था. So many of you were asking that you don't have the short notes. Okay. So you already have the long notes from the market, you have the long notes from your classrooms. You need the crisp notes. यही कल आपका डाउट था. इनफैक्ट आज भी कई स्टूडेंट्स ने डाउट रेज किया that we are looking for that they are looking for the short notes. Okay. तो short notes के लिए I just want to show you few notes of WPT. जैसे these notes are available in the Telegram channel only. You just need to go through these notes and you would be able to revise everything. So whatever you have studied in your classrooms, whatever content you have with you, ये उसका crisp और short version है, एकदम shortest possible version है. You just need to mug up WPT from here only. If you'll see that they are of 43-44 pages. So in 43-44 pages, you would be able to cover all the WPT. And apart from that, obviously जब कम pages होंगे तो revision easy हो जाएगा. It consists of all the pointers. It has all the pointers over here. Okay. So pointers are available. So with the help of these pointers, you would be able to write down the answers. Okay. So this would be fine, I guess. ये notes कहाँ मिलेंगे? ये notes आपको Telegram channel पे मिल जाएंगे. You just need to go through the Telegram channel and from there you can download it. Okay. So let us quickly see what kind of topics we have to cover. आज के में अपने पास एक PYQ है और एक I have tried to
क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है, तो इसको आप वैसे तो PYQ से इन्फ्लुएंस्ड है वो भी, तो ट्राई टू जस्ट स्टडी, ट्राई टू राइट दैट. जैसे व्हेन इट कम्स टू एरिस्टोटल एंड प्लेटो का कंपैरिजन, ये हम एक क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे. देन थ्योरी ऑफ जस्टिस, theory of state, this is all from theory of constitution, and then you have rule of law, every pointer on rule of law. Then authority of statesmen is different from the authority of masters, जैसा कि प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए कहा. then you have the theory of citizenship, you have the theory of slavery, okay, then you have the theory of revolution, views on property, and then finally there is criticism of Aristotle. Clear? स्कॉलर की बुकलेट अच्छा रह गई क्या? आई अपलोड दिस. मैं आज, मुझे याद दिला देना, ग्रुप ओपन है उस पर मैसेज डाल देना, आई अपलोड दैट, मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा. Look, it is always good to, if you will make your own notes, that is always good, but most of you were asking about the short notes, so that is why I'm providing that. I would suggest that rather than going with the short notes, making it by yourself, you should better focus on answer writing. If you focus on answer writing, so that would be more fruitful, that would be more rewarding. तो आप आंसर राइटिंग पे फोकस करो, नोट्स तो ऑलरेडी बहुत हैं, नोट्स तो देखो कभी कमी नहीं होंगे. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे. क्या है अपने पास क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इज, पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इनइक्वालिटी वाला, देन विल टेक द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, the cause of sedition is always to be found in inequality. There was a question in 2017 on the similar lines. The cause of sedition is to be found in inequality, है ना? So now the cause of sedition is to be found in inequality. First we need to understand what exactly is the keyword. इसका keyword क्या है? Okay, इसका keyword क्या है? Now when it comes to the keyword of this particular question, it is focusing upon that cause of revolution is inequality. So that means you have to focus on two ideas. Idea number one is inequality and how inequality breeds revolution. इसी तरह से क्वेश्चन होगा. So you need to tell, yeah, you should be aware about Aristotelian idea of equality or inequality. या Aristotle ने कैसे inequality को identify किया है, what kind of suggestions he has, how he is talking about the proportionate system of equality or distribution, how he is talking about the proportionate justice, तो वो कैसे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी की बात करता है. सो दिस इज व्हाट वी शुड अवेयर अबाउट. एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो अवेयर अबाउट हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन. उसके लिए रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज रेवोल्यूशन व्हेन इट कम्स टू दी एरिस्टोटलियन पॉइंट, है ना? एरिस्टोटल जब आता है तो उसके लिए क्या एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है, क्या माइनर चेंज को भी वो रेवोल्यूशन कहता है, क्या एक छोटे से चेंज को भी वो रेवोल्यूशन कहता है. So this is what is to be discussed. So we have inequality and we have revolution, two important keywords. Now how we are going to start such kind of questions? When it comes to Aristotle, what you can do is you can have a general introduction. मैंने यहाँ पे क्या किया है, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने ड्राफ्ट कर दिया. आप यूजुअली एरिस्टोटल में जनरल इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो. यूजुअली एरिस्टोटल के केस में यू विल फाइंड दैट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिस जनरल इंट्रोडक्शन थ्योरी वुड वर्क. कैसे वर्क करेगी? देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल, एक कॉमन सा पॉइंट है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर है, देन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, देन स्टडीड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, देन ऑब्वियसली हिज फेमस वर्क एंड जस्टिस एज द बेसिस ऑफ स्टेट. सो अगेन देयर आर सर्टेन कॉमन पॉइंट्स व्हिच यू कैन यूज टू निट योर इंट्रोडक्शन. आप इससे अपना इंट्रोडक्शन निट कर सकते हैं विद दीज कॉमन पॉइंट्स. Let us say question is on Aristotle, directly Aristotle पे है. Even if it is a 15 marker or 20 marker, in both the cases you can use this. ठीक है? तो आप दोनों केसेस में इस जनरल इंट्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो यहां से आप एक जनरल इंट्रोडक्शन उठा सकते हैं. और लेट अस से इफ यू वांट टू राइट अ 10 मार्कर, और 10 मार्कर में क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पूछा हुआ है सीधा, तो आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो दैट इन हिज फेमस वर्क ही हैज डिस्कस्ड अबाउट और ही हैज स्टडीड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड फ्रॉम दोज वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ही हैज डिटरमाइंड
that revolution happens to be the most common phenomena across various polis, across various city states. ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो. तो देखो ये डिपेंड करेगा कि अपने पास कितने वर्ड का आंसर है लिखने के लिए, कितने मार्क्स का आंसर है. तो टेक्निकली एक जनरल इंट्रोडक्शन टॉकिंग अबाउट द एरिस्टोटल्स आइडिया, टॉकिंग अबाउट हिज बुक, टॉकिंग अबाउट हिज बैकग्राउंड, टॉकिंग अबाउट हिज राइटिंग स्टाइल, ठीक है, इससे हम ले सकते हैं. ठीक है, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हम बना सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इंट्रोड्यूस करो पहले. तो इंट्रोड्यूस क्या करोगे? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिज वर्क पॉलिटिक्स, एंड देन हिज स्टडी अबाउट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस. फिर आप बताओगे व्हाट एग्जैक्टली इज रेवोल्यूशन एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग. वो रेवोल्यूशन को मानता क्या है, ठीक है, क्योंकि उसका रेवोल्यूशन मार्क्स के रेवोल्यूशन से फर्क आएगा. तो वो रेवोल्यूशन की थ्योरी को क्या मानता है एग्जैक्टली, वो कैसे डिफाइन करता है. वो कहता है रेवोल्यूशन क्या है? Revolution is basically a slight change in the system. Why a slight change? Because he's a status quoist, he's a conservative. तो यहाँ पे you can use the connecting words from transitioning from introduction paragraph to the second paragraph. You can talk about his status, that he's a status quoist. He's a very conservative person who doesn't want any a slight change in the system, and that is why he has identified the revolutions. अब उसकी revolution की definition क्या है? What exactly revolution per se for him? When he talks about revolution, what kind of revolution is he telling us? He is telling us that whenever there is a change in the constitution, whenever there is overturning the government, whenever there is any kind of people or people looking towards inequality, whenever people are not satisfied with the existing system, whenever people do not feel happy in the existing system, they are bound to do revolt. They are bound to change the system, even that change is slight in nature. So people feelings are, वो ये भी कहता है that feelings can be real, feelings can be imaginary. फीलिंग लोगों की रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं. बट फीलिंग्स क्या होंगी? फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, फीलिंग ऑफ जेलेसी, फीलिंग ऑफ एनवी, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, फीलिंग ऑफ अनफेयर सिस्टम. Okay, so this is where what he's trying to tell us, that whenever the people of any polis are not happy or have these kinds of feelings, definitely there is going to be a revolution, and this is what he wants to stop. This is what he is pointing towards, that I don't want any change. I am a status quoist. मुझे change नहीं चाहिए, मुझे system को वैसे ही रखना है. I don't want a slight change. I don't want even a single kind of change, because I am a conservative scholar. I am a conservative thinker when it comes to change. Are you getting this? Exactly. Over here, you can also talk about the general causes as well as the specific causes. Okay. So he has also identified that the revolution has to be, the causes of the revolution are general in nature, the causes of the revolution are specific in nature. Okay, so there are certain general, there are certain specific ways, specific causes, because of which the change is bound to happen. Now comes that how this theory of revolution through inequality, yeah, how inequality breeds revolution is the right idea. You can tell them that look, whatever he was writing, he was not writing in a vague manner. If you will relate it with the comparative system, if you will try to relate it with the comparative system or the contemporary system, you will find that whenever there is inequality, injustice, inequality, or any kind of mismanagement or maladministration, then revolutions are bound to happen. And in the history of humankind, from 16th century till date, in past 400 years, revolution have happened. In past 300 years, revolution have happened. How they have happened? Whether you talk about French Revolution, you talk about the American Revolution, you talk about the Puritan Revolution the Glorious Revolution of Britain, if you talk about that, if you talk about the recent Arab Spring, if you talk about Naxalism, everything was breeded, or everything was there
all kinds of revolution have happened because of the inequality in the system. Are you getting this? Yes, yes. Just a moment. He wanted to keep the system. Yes. So he studied 158 to justify. Many times you do a comparative study to justify your stand. So it can be said that yes, look, it is all because of Aristotle's birthplace and the area and the city he was living in. Okay. So born in Stagira and living in Greece, he has seen that in a Greek system, the one who protests have to take hemlock. He has seen the status of Socrates. So he never wanted to challenge the existing system. He was not the original Greek citizen. Okay, he was not from Athens. He was not the Athenian citizen. So that is why he doesn't wanted any kind of change. He wanted status quo. Okay. Yes, you can talk about all the revolutions. So that means what you are trying to do is first you are telling them what exactly Aristotle's view on revolutions are, how across the world inequality have breeded revolutions. Okay, this would be the one side. You have 3 pages to write. Now this is a 3-page answer. तो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया अबाउट द एरिस्टोटल्स बैकग्राउंड, हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, द कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन. Yes, inequality, injustice happens to be specific one, and from there you will try to establish the viewpoint कि देखो वर्ल्ड में भी ऐसा हुआ है, एरिस्टोटल कुछ नया नहीं कह रहा था, but nevertheless you have the other side of the story as well. Not every revolution or not every revolution was caused because of inequality. There must have been ethnic cases, there must have been nationalist cases, there are various other reasons of revolution. तो critique में क्या होगा? Hannah Arendt क्या कहेगी? भाई Hannah Arendt talks about revolutions. She's like revolutions are about freedoms. If you will do revolution, you will get the freedom. Okay. So then second is Fukuyama. It is not the inequality. Many times revolution happens because of the weak systems. Institutions are highly weak. This is what Francis Fukuyama is saying. Because of the weak institutions, because of the weak governments, the revolutions are bound to happen. Then obviously not all seditions are because of the inequality. There are seditions because of the ethnic system or because of the nationalism. तो रेवोल्यूशन करने के और भी रीजंस होते हैं, बट नेवरदलेस एरिस्टोटल जो कह रहा था वो गलत नहीं था, बिकॉज मार्क्स हैज राइटली सेड दैट इनइक्वालिटी विल डेफिनेटली ब्रिंग और breed revolution. Tocqueville also wants to say revolution arise from inequality as well as the expectations of the population. When the population has expectations, the government doesn't meet them, definitely revolutions are going to happen. Getting this? Fine. Is it okay? And then obviously, so then what is to be done? How to stop the revolutions? Look, your answers should also have a prescriptive approach. You need to give them the prescription. What has happened has happened. I'll give you the solution of the problem as well. Every UPSC answer must be looking for some kind of prescription. So do mention the prescriptions over here. What are the prescriptions? Okay. So then like to be treated alike, recognize talent and merit, reward the hard work. So definitely reward the justice. So definitely you are going to do away with the revolutions. तो अगर आपने ये सब implement कर दिया, at the end what you will tell them that what you need to do is you need to implement such kind of changes. You need to ensure the like should be treated alike. You need to ensure recognizing the talent. Obviously you need to ensure equality opportunity, proportionate justice, distributive justice. Definitely revolutions will not take place and there would be stability all around. Getting this?
Any doubt? So are you able to understand? Okay. So this is how we have to link the question from the contemporary as well. So you'll see हमने WPT को भी contemporary से link कर दिया. अब इससे हुआ क्या? Let us say we have a 15 marker. 15 marker थोड़ा सा different हो गया. अपना 15 marker जो है वो बाकियों से थोड़ा different हो गया. At the same time इस 15 marker में contemporary add करने से आपकी word limit भी पूरी हो गई और आपको repetition भी नहीं करना पड़ा. हमने कुछ repeat किया. हमने कहीं बार बार पॉलिटिक्स का नाम नहीं लिखा. आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग द नेम ऑफ द बुक अगेन एंड अगेन, टेलिंग द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन 2-3 टाइम्स. जरूरत ही नहीं है. यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, यू जस्ट नीड टू यूज इट प्रॉपरली, स्ट्रक्चर इट एंड यूज इट. Yes, exactly. You can mention the recent Nepal crisis. It is going on. Okay, inequality has given rise to revolutions. You have a lot of examples from the world everywhere. Okay, all kinds of revolution, all kinds of changes. जहां जहां पे प्रोटेस्ट हुई है, इनइक्वालिटी ही बेसिक रीजन रहा है. Okay, now then there is another question. Explain Aristotelian view of politics. To what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracies? If you will see that from this year 2025, लास्ट टाइम भी उन्होंने टेस्ट किया था थोड़ा सा, लेकिन इस बार तो दे हैव मेड श्योर दैट दे आर गोइंग टू आस्क वेरी करंट एंड वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस. व्हाट दे विल बी डूइंग इज they will be asking the questions which are related, or the questions have been asked in such manner that a relation with the current affairs or with the current happenings has to be implemented. लॉक पे क्वेश्चन था इस बार. इसी तरह से यहां पर एरिस्टोटल पे भी क्वेश्चन है कि क्या एरिस्टोटल का व्यू पॉलिटिक्स पे क्या है और किस एक्सटेंट तक एरिस्टोटल का व्यू मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के साथ अलाइन करता है, इन सिंक विद इट. हाउ कैन वन राइट इन 200-220 words? So technically, look, you have 3 pages. So 3 pages definitely will give you approx 210 to 240 words. तो हमें क्या करना है, जितने यहाँ पे हमने पॉइंटर्स लिखे हैं ना, हमें उतने ही यूज करने हैं. वी डोंट हैव टू एक्सपैंड व्हाट इज नक्सलिज्म, वी डोंट हैव टू टेल देम अबाउट हाउ नक्सलिज्म हैपेंड. वी विल जस्ट राइट इन वन पैराग्राफ कि लुक, द Aristotelian idea of revolution can be rightly witnessed in American, French, Marxist, Arab Spring. Like this, one paragraph to cover the contemporary part. Fine, Manya? So you don't have to write down the factors behind that. You just have, because factors तो आप ऊपर लिख के आए हो, आपने उनको बताया ना कि देखो ये है रीजन रेवोल्यूशन का. अब आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो. यू आर जस्ट गिविंग दी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कि लुक, सब्सटेंशिएटिंग आई वुड से, नॉट आर्ग्यूमेंट्स. अब तो सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि देखो मैंने जो ऊपर बात की है, अब उसके एग्जाम्पल्स यहां पे मैं आपको बता रही हूं. Got this? Now, to what extent, what exactly is the Aristotelian view of politics? To what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracies? Next question है. अब again this question happens to be very straight. एक तो सीधा सीधा पूछ ले, explain the Aristotelian view of politics. अब this must be 20 marker है ना, ये 20 marker था ना. तो ऐसे में क्या होगा, फर्स्ट यू टेल देम व्हाट हु एग्जैक्टली इज एरिस्टोटल. फिर वही एक अपने पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन बना दिया हमने एरिस्टोटल के बारे में, इंट्रोड्यूसिंग द एरिस्टोटल थ्रू हिज वर्क, थ्रू हिज बुक, थ्रू हिज पेडागोजी. आप डिपेंड करता है कैसे उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो. आप बता सकते हो कैसे वो ग्रीक स्कॉलर था, ग्रीक ट्रेडिशन से आता था, पॉलिटिक्स उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जैसे आइडियाज उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं. इस तरह से यू कैन स्टार्ट. ओके, डन. अभी मैं स्कॉलर्स आपको दिए ना, ये रेवोल्यूशन में स्कॉलर्स दे दिए, मैं मार्क्स दे दिया, टॉकेविले दे दिया, हना आर्डेंट दे दिया, फुकुयामा दे दिया. 15 मार्कर में 4 स्कॉलर्स बहुत है, इससे ज्यादा क्या करने लिख के.
लास्ट में ये इनवाइटेड सेंड कर सकते हो, वो भी एक सही तरीका है, बट बहुत क्लीशे हो जाएगा, हर कोई लिख रहा है। देखो ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। क्रिटिक दिया ना, हना आर्डेंट का क्रिटिक दिया, फुकुयामा का क्रिटिक दिया, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में हना आर्डेंट और फुकुयामा का क्रिटिक दिया। नेक्स्ट आ जाता है उसका व्यू ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। देखो व्हेन इट कम्स टू व्यू ऑफ पॉलिटिक्स में वो क्या कहता है, वो कहता है कि पॉलिटिक्स एक एसेंशियल आइडिया है, वर्चुअस लाइफ है, कंपैरेटिव मेथड है, पॉलिटी बेस्ट मेथड है, बैलेंस्ड गोल्डन मीन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ और प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की वो बात करता है। ठीक है, ये जनरल आइडियाज हमारे पास है। अब जैसे जब हम बार्कर की बात करते हैं, अर्न्स्ट बार्कर क्या कहता है, ये कहता है कि जो एरिस्टोटल का मेथड था वाज हाईली साइंटिफिक इन नेचर, हिज व्यू ऑन पॉलिटिक्स वर हाईली साइंटिफिक इन नेचर, दे वर सिस्टमैटिक वर्क एंड एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स। इस तरह से वो इंट्रोड्यूस करता है प्लेटो के, सॉरी एरिस्टोटल के वर्क को, एरिस्टोटल के आइडिया को इस तरह से इंट्रोड्यूस करता है। तो अपने पास जो पहला पार्ट है एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, तो आपने बता दिया एक पैराग्राफ में अबाउट द एरिस्टोटल, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में यू कैन टेल देम अबाउट हिज व्यू ऑन पॉलिटिक्स, हमने जो भी देखा उसके पॉलिटिक्स के क्या व्यू थे। ठीक है, इस तरह से थर्ड पैराग्राफ वुड बी अबाउट बार्कर्स व्यू ऑन एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरह से आपने किया। ठीक है, डन। नेक्स्ट कम्स, मैं आ रहा हूं विदाउट्स पे आ रहा हूं। अब बात आती है ये क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिज व्यू ऑन पॉलिटिक्स and how his idea of politics is sync with the modern constitutional democracies. अब now there would be a contradiction to this viewpoint कि नहीं, उसका आइडिया completely sync नहीं होता। To an extent he has a sync and he also has a, you can say, a difference of opinion, या उसका जो आइडिया है वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। सो देन व्हाट यू विल डू इज you will again part your paper into two parts। पहले आप बताओगे कि how his idea is in syncing or is sync with the modern political democracies, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे हमने पहला पैराग्राफ बताया एरिस्टोटल का, दूसरा पैराग्राफ बताया उसके व्यूज का, तीसरे पैराग्राफ में हमने बार्कर को लिखा, चौथे पैराग्राफ में हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी होती क्या है, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया ना, वी नीड टू टेल देम व्हाट मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर ऑल अबाउट। यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करने के बाद आप इसे लिंक कर सकते हो कि सी ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, he talked about the distributive justice which is still relevant, his concept of zoon politikon। ठीक है, this is again that human is an essential part of politics, ये भी है। देन उसके बाद टेलियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ना, टेलियोलॉजिकल पॉलिटिक्स क्या कहती है कि पॉलिटिक्स हैज अ गोल, पॉलिटिक्स हैज एन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव, कॉमन गुड, यूडेमोनिया, हैप्पीनेस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स के यही सिंक है, दैट एरिस्टोटेलियन व्यू पॉइंट इज इन सिंक विद द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स, और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स आर इन सिंक विद द एरिस्टोटेलियन सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा ना? वेयर एज ऑन द अदर हैंड, नाउ ये लिखते लिखते आपके पास ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स, 1 पेज और निकल जाएगा। अब यू आर थ्रू विद द 2 पेजेस, देन यू कैन फोकस अप्रॉक्स मोर देन हाफ पेज ऑन नॉन सिंकिंग फीचर्स। अब उसके फीचर्स जो उसके और जो आइडियाज थे वो सिंक नहीं हो रहे हैं। कैसे सिंक नहीं हो रहे? उसका आइडिया ऑफ पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म सिंक नहीं होगा। उसका प्रॉपर्टीड क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो, सिलेक्टिव एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट था, वुमेन को वोट्स ना देने का जो कॉन्सेप्ट था, स्लेवरी को जस्टिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट था, ऑल दोज इल, है ना, वो यहाँ पर, जैसे वो रिवोल्यूशन को करने से भी मना करता है, चेंज इज वेरी मच एसेंशियल, है ना। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में यू हैव द राइट टू डिसेंट, डिसेंट होगा तभी तो रिवोल्यूशन आएगा। तो इस तरह से हिज आइडियाज आर ऑल्सो, फ्यू आइडियाज आर नॉट वेरी मच सिंक इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। कुछ आइडियाज उसके सिंक में है, कुछ आइडियाज उसके सिंक में नहीं है। जबकि क्वेश्चन इज only upon to what extent do you think it has contributed? Yes, to an extent it has contributed, but not everything what Aristotle wrote is in sync with the modern constitutional systems. Are you getting this? सिटीजनशिप का आइडिया है, लिमिटेड सिटीजनशिप का आइडिया है, प्रॉपर्टी क्लास का जो आइडिया है, ठीक है। तो अगेन असिंक रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक सिस्टम, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट, ओवर हेयर सिलेक्टिव सिटीजनशिप, selective voting rights, everything is selective, promotion of slavery, okay, then उसके बाद
वुमेन को राइट्स ना देना। क्लियर? हाँ बिल्कुल क्रिटिसिज्म लिखना जरूरी है, बिना क्रिटिसिज्म लिखे बात नहीं बनेगी। सो क्रिटिसिज्म हैपेंस टू बी हाईली एसेंशियल। और एट द एंड आप क्या करोगे, ये सब लिखने के बाद आप फाइनली इसी बात पे वाइंड अप करोगे कि यस, डिस्पाइट ऑफ द इश्यूज, जो जो इश्यूज थे, इसका जो आइडिया था दैट वाज वेरी मच एसेंशियल। अब अपने पास स्कॉलर्स कौन कौन से हैं? अपने पास स्कॉलर्स है, सबाइन ने भी यही कहा कि एरिस्टोटल का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है दैट इज द फोर रनर ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। बारकर ने तो उसको फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह दिया। पॉपर ने कहा कि ठीक है कंजर्वेटिव जरूर था, लेकिन हाँ इसने कई तरह से एक बेसिस रखा मॉडर्न डेमोक्रेसीज का। वाइपर क्या कहता है कि अल्टीमेटली मॉडर्न मिक्स गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन हाँ ठीक है उसने जो आइडिया दिया वो सिटी स्टेट तक था, लेकिन मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम्स में वो इम्प्लीमेंटेबल है। क्लियर? इस तरह से आप, और फाइनली आप ये भी बता सकते हो कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप सिंक दे रहे हो ना, यू कैन पुट द एग्जाम्पल्स ओवर हियर, यू हैव द स्कोप ऑफ पुटिंग द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। जब आप सिंक दे रहे हो तो आप यहां पे एग्जाम्पल्स बता सकते हो। यू कैन राइट दिस सिंक विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न एग्जाम्पल्स, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इस तरह से यू कैन टेल देम। क्लियर? देन उसके बाद आपने क्रिटिसिज्म में भी बता दिया कि यस आइडिया वाज, अगेन हिज आइडिया वाज लिमिटेड इन नेचर, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा जैसे उसने टिलोजिकल नेचुरलिज्म की बात करी है। अब होता क्या है, वो ये कहता है कि अल्टीमेटली ये जो आइडिया है ऑफ यूडेमोनिया, ये हम क्या देखेंगे कि एवरीवन कैन नॉट बी हैप्पी, ये डाइवर्स सोसाइटीज में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। व्हेनेवर सोसाइटी इज डाइवर्स यू कैन नॉट इंप्लीमेंट दिस टेलियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। तो ये हमें यहां पर लिखना होगा कि नहीं, कई हमें यहां पर ड्यूटीज पे फोकस नहीं करना। अब उसने कहा ड्यूटीज पे फोकस करो, उसने कहा कॉमन गुड पे फोकस करो। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर नॉट अबाउट ड्यूटीज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर नॉट अबाउट कॉमन गुड। आर यू गेटिंग दिस? दे आर नॉट अबाउट कॉमन गुड। जबकि वो तो कहता है ना कॉमन गुड on one side yes it is for the common good, but on the other side no, it cannot be about only common good. Getting this? Fine. And then ultimately yes you can wind up on the positive note. आप उसको एक पॉजिटिव नोट में वाइंड अप कर सकते हो, टेलिंग देम yes, despite the certain limitations his idea have been influential in development of modern day constitutional democracies and have given the birth to the modern constitutional systems. When it comes to Aristotle, there is no as such major critique because most of his ideas are highly implementable, except his idea of slavery. Except slavery, you will not find much criticism of Aristotelian viewpoint. क्योंकि radical नहीं थे. He always adopted the concept of golden mean. He was always balancing out the system. है ना, उसने कभी radical viewpoints नहीं दिए. तो इसलिए जैसे on the lines of Plato, you will not find much criticism over here. Getting this? Doubt हुआ clear? Look, he is right. This is what we are saying, that he was right when it comes to middle class. बात तो देखो गलत नहीं है ना, वोटिंग राइट्स पहले क्या होता है, विदाउट गिविंग द सिविक सेंस, गिविंग द वोटिंग राइट्स इज यूजलेस, है ना, द वोटिंग राइट वुड बी वेस्टेड। हना आर्डन भी यही कहती है ना, दैट यू नीड टू ब्रिंग दिस सिविक रिपब्लिकनिज्म। तो पहले आपको उनको ये बात अवेयर करानी पड़ेगी। पढ़ेंगे ना हम, इस बार क्वेश्चन भी था ट्रायड ऑफ लेबर में, पहले आपको ये बात
अवेयर करानी पड़ेगी व्हाट एक्शन इज ऑल अबाउट, है ना। यू आर अ जून पॉलिटिकॉन, यू आर नॉट एनिमल लेबर ऑन। तो पहले तो ये बात का रियलाइजेशन कराना पड़ेगा, तभी वोटिंग राइट देना। तो गलत तो वो नहीं कह रहा है, बट अगेन वी कैन नॉट जस्टिफाई सम। आप एरिस्टोटल के मार्क्स के व्यूज से मतलब उससे आप अग्री कर सकते हो, करते होगे, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। यू नीड टू टेल देम कि व्हाट ही वाज सेइंग एट दैट टाइम वाज राइट एट दैट टाइम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है यहाँ पर, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। बट इन द मॉडर्न टाइम्स this is not how the system works. In the modern times, it is about voting right for all. It is about universal franchise. Okay, you cannot differentiate you cannot give the voting right on the basis of property and no property. Hatin, the two more questions in the paper in short at the end. कहाँ पे दिया हुआ है? There must be PYQs. Explain Aristotle view of politics. We have discussed. Everyone equality, cause of revolution, 2017 discussed. Aristotle's conception of equality इसी से निकलेगा ना. His idea of equality. What equality is for Aristotle. His viewpoint on equality. How he's talking about the distributive equality. How he's talking about the proportionate equality. यही आ जाएगा. It's a 10 marker. अब देखो, this question is a 10 marker. So then you can directly start with a general introduction of Aristotle, talking about his style of writing or talking about his background, talking about his work. अभी हमने एक general introduction समझा था ना, वहां से. Then next paragraph would be that how he wanted to have a equal system because he was not happy or he was very scared of the revolutions. He was of this viewpoint that inequality would breed revolution and revolution will bring change. So he was anti-change. He was the status quoist. दो paragraphs निकाल दिए. Third paragraph would be his view on equality. Then tell them in two paragraphs his views on equality. Then next, relate his view of equality with the modern political systems or modern equality system. तो modern equality system भी यही कहता है कि like should be treated alike. बिल्कुल exactly यहाँ पे आएगा. अभी हमने पढ़ा इसको. इसमें आपकी ये स्लाइड एकदम काम आ जाएगी. ये स्लाइड आपके उस क्वेश्चन में भी काम आ जाएगी. यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना. Writing down the statements not required. In inverted commas, writing down the statements of scholars in inverted commas is not required because many times due to the paucity of time we would not be able to write the complete sentence of the scholar. Rather than we would write the crisp of that scholar. तो आपको जरूरत नहीं है. This scholar Sabine has rightly said, okay, Fukuyama has highlighted, that's it. Because वहां पे तो just लिखने का होगा. आर्टिकल 14 से इसको रिलेट कर देना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से रिलेट कर देना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रिलेट कर देना. इस तरह से यू कैन टॉक अबाउट आइडिया ऑफ इक्वालिटी. 2 पेजेस है एंड एट द एंड यू कैन से दैट यस हिज आइडिया ऑफ इक्वालिटी was precursor to the modern equality system and have laid the foundation stone of the modern political systems. इस तरह से आप पॉजिटिव नोट पे क्वेश्चन एंड कर देंगे. यस, primitive affirmative action, है ना. His idea has given birth to the modern affirmative state or the modern proportionate state, equal states. ठीक है. अच्छा, बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम मैं आपकी कॉपीज अभी आपने कॉपीज लिखी हैं. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी सेंडिंग यू द वॉइस नोट इन द ग्रुप. तो जो आपकी कॉपी है विद द इंडिविजुअल कॉपी आई विल सेंड द वॉइस नोट. विल दैट वर्क? आज लेट हो गई थी क्लास अगेन विद द टेक्निकल एरर, तो आई गेस दैट टेक्निकल एरर हैज बीन रिजॉल्व्ड. कल का टॉपिक है अपना मैकियावेली. इंटरेस्टिंग है मैकियावेली. कोई और डाउट हो तो पूछो.
बाकी इसको स्कैन कर लेना। ठीक है, आई विल सेंड यू दी वॉइस नोट्स आफ्टर 9:30। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। टुमारो वी हैव मैकेवेली 6 PM। तो पता भी नहीं चलेगा विद टाइम, आपके छोटे छोटे है ना, हम कहते हैं ना कि दी पीस मिल स्टेप्स आर द जाइंट लीप। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम इज अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। WPT के थिंकर्स में डिफिकल्टी है, देखो उसके लिए तो फिर नोट्स पढ़ लो या लेक्चर्स देख लो, बिकॉज WPT इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसमें ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एक ऐसा चीज है WPT जो किसी भी PSR के स्टूडेंट से पूछ लो, वो कहता है WPT तो रटा हुआ है। जैसे व्हेन आई स्टार्ट दी आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज जब हमारी स्टार्ट होती है तो उसमें WPT पहला आता है, तो WPT तक तो सब आंसर्स लिख लेते हैं, प्रॉब्लम आती है थ्योरी से, और फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 2A में। You don't need to skim through the Socrates completely. In the notes only, I have given 2 pages on Socrates. That is more than sufficient. ठीक है, या PYQs की हेल्प से भी आप कर सकते हो, बट इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू रीड सोक्रेटिस कंप्लीटली, वैसे तो देखो यू नीड टू रीड सोक्रेटिस फॉर एथिक्स एज वेल। जितना सोक्रेटिस वहां पढ़ना है उससे थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी ऑफ नॉलेज आप ऐड करके, एपिस्टेमोलॉजी ऐड करके यहाँ पढ़ना है, दैट्स इट। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑन सोक्रेटिस इज रिक्वायर्ड। Point number one is question would not be asked. Point number two is even if a question would be asked, it would be very contemporary in nature, and with the existing knowledge, you would be able to write it. So definitely, I'll not ask you. I'll say that do not go. Do not devote 1 week on Socrates. That is not going to bring good results. Okay. See you tomorrow. कल मिलते हैं फिर। हाँ, स्कॉलर्स वाली बुकलेट में अभी अपलोड कर देता हूँ। फाइन। देन कल मिलते हैं मैकेवली। टिल देन गुड बाय एवरीवन। ग्रुप में कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आई सी ग्रुप में कमेंट सेक्शन में कैसे अपलोड होती है, वो ना शायद उसमें होती है चैनल पे, आई सी। हाउ मच टाइम ऑन वन थिंकर? टेक्निकली योर WPT शुड वाइंड अप इन 10 days। इससे ज़्यादा WPT को देने का कोई फायदा नहीं है। इफ यू सी आउट ऑफ द WPT दे आर आस्किंग 1 question 2 questions मैक्सिमम, 2 question आ जाएंगे मैक्सिमम WPT से, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो उसके लिए डिवोटिंग 1 month 2 month इज वेस्टेज, है ना। देखो यहाँ पे यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू गिव द प्रोपोर्शनेट टाइम। टाइम इज वेरी क्रूशियल, इट इज, यू हैव पॉसिटी ऑफ टाइम। आपको ना प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करना है, बैलेंसिंग करनी है टाइम की, तो टाइम बैलेंसिंग इज हाईली रिक्वायर्ड। डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 days ऑन WPT, उससे ज्यादा WPT इज नॉट वर्थ गिविंग टाइम, ध्यान रखना। ओके, चलो, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो देन, टेक केयर and keep writing the answers. Writing the answers is very much essential.